Hi, good evening, viewers. So today we have India's one of the topmost oncosurgeon with us, and it's such a pleasure to have you, Dr. Shishir Shetty. So before we begin, I want you to introduce yourself to our viewers. So thanks Richard for calling me for your chat and very interesting concept of heart-to-heart talk that I want to talk. Been a cancer surgeon for nearly 20 years now, and all I can think, talk, do is probably cancer. And we deal about life, death, anxieties, treatment, recurrence, sadness, emotions. All the time, I think. Before we begin with such a, it's such an important topic, because cancer in any person's life or any family's life changes a lot of things. The life will never be same again for a lot of people when we talk about cancer. So we have so much to discuss there. But before that, I would like to know where you did your studies and where did you got educated and what kind of fellowships have you done or anything which is educational. I'm a Mumbai boy, and I did a lot of my surgical career in Hubli and subsequently in Sion Hospital. I think you have done your oncosurgery in Tata Memorial Hospital. So it's one of the best institutes of India. I was lucky to. And I think you were the first one to do oncosurgery, right? Yes. And I think you have pioneered in robotics as well. You're one of the best and probably the first robotic oncosurgeons, one of them. So, yes, treatment-wise, yes, training-wise, yes. Tata Memorial, probably the best cancer institute in the world. I've been trained there, and I'm very, very. I owe whatever I am to Tata Memorial Hospital, and the service which is done by this great institute is awesome, and I do my little bit. So how many years that you have, since you passed your oncosurgery, it's been how many years now? So it is 19 years since I passed out. All right. So as I was thinking about today's talk, I realized that over the time a lot of things have changed. Like what we were trained as HIV was death. Does cancer still mean death? You see, things have not changed. It become bad to worse. Okay. It's actually become, except cervix, all other cancers, the incidence has increased. And it's not my data, it's the Globocon data. All right. And it's not a good sign. And the problem is that we are becoming Americanized. Our life is becoming Americanized. And the Americans are becoming Indianized. That's funny. Right. And so that's probably why we are seeing more. That's probably why we are seeing more. So when you say Americanized, I still believe that 80% or 70% of the population of India is still rural. So when you say in a country as vast as India that India is becoming Western, then I do not know how do we really understand the problem. I used to tell people that if you see a KFC or a McDonald's in a town, that means the town is growing. Now, as we go along Maharashtra, let's take Maharashtra as an example. Right. You find a KFC in every corner. So the development and habits have changed. Right. We are talking about a rural population who's got TV, who's got air conditioner, has got a cell phone. Right. Okay, and they are busy. Yes. True. The rural population which was there 40 years ago is completely different from what is there now. All right. There is a whole lot of difference in the way they live and what they do now, because it's changed. So you mean to say that lifestyles... Amazing. So cancer has become or has developed as a major lifestyle problem? It is not developed, it is a lifestyle problem. All right. Please understand that of all the causes we know of cancer, we know definitely that 50 to 55% of all cancers are caused by tobacco. All right. So tobacco is a lifestyle problem. All right. We know that alcohol is a problem. We know that obesity is a problem. We know that food can cause cancer. So fatty food, junk food. We know all that. Now, when we combine all that, most of the cancers are caused by lifestyle problem. So now that you are saying that most of these pictures are lifestyle, it also gives a ray of hope
that there is a preventive angle to this. So if Right. we start reverting back to few of the good practices, probably we will see a healthier India. So you have to look back at what your grandmother did, or probably your great grandmother did, as far as lifestyle was concerned. Remove all those things which had hygiene issues in our country. Probably we will have lesser cancer. So if you would have to look, we cannot change the whole world, but a family, a unit can change. So if you had to advise few things which are very close to your heart, that at least let go of these things and you'll be healthier, what is your advice? So I think the biggest contribution for cancer, as far as lifestyle death that we see, is probably smoking. So off smoking. One. And more than smoking, believe me, is chewing tobacco. All right. And in tobacco, gutka. So we Gutka has made a lot of people very prosperous, but it has destroyed, a single 2 rupee packet has destroyed more lives than a nuclear bomb. All right. So now this was, as I understand, tobacco is a part of oral cancer and probably to some extent lung cancer. No, kidney cancer, All bladder right. cancer. Okay, so Yeah. that was, so tobacco not only spoils oral, It's but bladder cancer is a known cause of okay. so bladder, kidney. सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू. हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि सिर्फ टोबैको जो है ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर नहीं करता, Yeah, of course. बट ब्लैडर कैंसर और आपने कहा अभी ब्लैडर के अलावा कौन सा Kidney cancer. किडनी Kidney कैंसर. cancer. किडनी कैंसर भी कॉज करता है. तो ये कुछ बहुत नया निकला उसमें से. तो एक तो हमें ये समझ में आया कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है कैंसर, और इसको हम डेफिनेटली कुछ छोटी छोटी चीज़ों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. 100%. तो हमें ये भी जानना था कि क्या आप जब पेशेंट कोई आता है आपके पास, तो उनका नर्वसनेस, मतलब अगर वो कैंसर का रिपोर्ट लेके आते हैं, तो आपका पहला काउंसलिंग कैसा होता है? And before that, I want to tell you something. ओके. हमको सबको मालूम है कि ये चीज़ों से प्रॉब्लम होता है, करेक्ट. बट स्टिल वी स्टिल डू इट. देयर इज अ डिनायल. मुझे नहीं होगा. डू यू क्रॉस द रोड विदाउट सीइंग लेफ्ट एंड राइट? राइट, वी वर थॉट कि पहले राइट देखो, गाड़ी आ रहा है, फिर लेफ्ट देखो, फिर क्रॉस करते रहो. करेक्ट. बट आँख बंद करके रोड क्रॉस करोगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो गाड़ी ठुकेगी किसको? कई सही बात. गाड़ी रुक गई, नसीब नहीं रुका, नसीब. सो द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ कैंसर इफ यू हैव ऑल दिस लाइफस्टाइल्स इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है. एंड दिस इज विलिंगली वी आर एक्सेप्टिंग इट. एट द सेम टाइम हम ये सोच रहे कि हमको नहीं होगा, उसको होगा, इसको होगा, मुझे नहीं होगा. मुझे क्यों नहीं होगा, ये हम नहीं सोचते. Again, Nobody- coming to same question. Nobody is immune. All right. So Nobody is immune. एक टेक होम मैसेज तो क्लियर है कि अपने लाइफस्टाइल चेंजेस हम जितनी जल्दी करें बेटरमेंट के लिए, और प्रोबेबली वी गो बैक टू आवर ओन एंशिएंट हेल्दी लिविंग, इट विल हेल्प. एंड कैंसर जो है वो टोबैको यानी तंबाकू एक मेजर कारण है बहुत सारे कैंसर्स के लिए. Thank you so much for highlighting this such a important message to the general society. ये सब कुछ जानना ज़रूरी है कि हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं. लेकिन मैं अभी फिर से, क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है लोगों से डील करने का, और चलिए सोसाइटी बड़ी होती है, लेकिन जिस पर्सन को हो गया, एंड वी हैड डिस्कस कि इट चेंजेस द होल फैमिली. तो बहुत बार क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को कोई सिम्टम हो भी रहा है, तो शायद वो डर के मारे कोई टेस्ट ही नहीं कराता है, और उसको शायद नोइंगली उसके स्टेजेस बढ़ जाते होंगे. तो क्या ऐसा आपके एक्सपीरियंस में होता है कि पेशेंट को थोड़ा थोड़ा सिम्टम हो रहा था, उसकी डीप गट फीलिंग हो रहा था कि शायद मुझे जांच कराना चाहिए, पर वो कैंसर का डर इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट इमीडिएटली अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते? या लोग सोचते हैं कि हालांकि इंडिया में ब्रेस्ट में अगर लंप हुआ कोई लेडी को, कोई भी लेडी को, वो रूरल हो, अर्बन हो, किधर भी हो, अगर उसको ब्रेस्ट में लंप हुआ तो इट इज़ ऑब्वियस दैट शायद कैंसर हो सकता है. बट वन, ये सोचते कि मुझे नहीं हो, दुनिया भर का ट्रीटमेंट कराएंगे ये देख के कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा कि नहीं, ऑपरेशन से नहीं होगा.
डिनायल. So it is a major problem. हैबिट्स छोड़ के डिनायल इज आई फील द मेजर कॉज ऑफ अपस्टेजिंग. दैट मीन जो पेशेंट स्टेज 1 में आ सकता था वो स्टेज 2 में आता है, स्टेज 3 में आता है. एंड ये बहुत कॉमन है अपने कंट्री में. तो हम लोग जिस रास्ते जा रहे हैं वो शायद सही है कि एक तो हम टोबैको छोड़ दें और दूसरा हम डिनाइल भी छोड़ दें. अगर हमें थोड़ा भी कुछ डाउट लगे तो देयर आर पीपल, और अर्ली आएंगे तो शायद ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी बेटर होंगे. आई नो. तो आई कीप टेलिंग पीपल, इट्स सो फनी कि लोग जब नॉर्मल चेकअप के लिए जाते हैं एंड अगर चेकअप ऐसे डॉक्टर के पास गए छोटे मोटे बीमारी के लिए, और अगर उनके पास गए तो एक्सरे लिखा, ब्लड टेस्ट लिखा, खांसी ठीक हो गया, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, तो पेशेंट्स डॉक्टर को बहुत गाली देते हैं. बोलते हैं कि अरे यार नॉर्मल आ गया, पैसा वेस्ट हो गया. करेक्ट, सही बात है. सो व्हेन ऐसा एटीट्यूड जब रहता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई कि आपको वो 1,500, 1,000, 500 में आपको कैंसर चाहिए था कि आपको टीबी चाहिए था. नहीं. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. राइट. हम लोग एक अच्छे मूवी थिएटर में जाए तो अच्छा खासा खर्चा होता है. Correct. लेकिन उसका खुद का चेकअप नहीं कराते हैं. लाइफ इज प्रोबेबली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एज वी हैव जस्ट डिस्कस दैट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो आते हैं वो ऑलरेडी थोड़े एडवांस स्टेजेस में होते हैं. तो फ्रॉम एक तो पेशेंट को काउंसल और दूसरा उनके रिलेटिव्स का काउंसल. तो आपका नॉर्मली कैसे शुरुआत करते हैं आप काउंसलिंग का, क्योंकि यू नो दैट एक्सेप्टेंस एंड फिर कैंसर स्टिल मीन्स डेथ. सो फर्स्ट इज confirmation of diagnosis. करेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. यो एक बार कंफर्म हो गया डायग्नोसिस, हम लोग एक स्टेजिंग करके एक चीज़ करते हैं कि बीमारी कितना स्प्रेड हुआ है. उसके बेसिस पे हम लोग एक रफ एस्टिमेट बोलते हैं कि बीमारी क्यूरेबल है, कंट्रोलेबल है या क्यूरेबल नहीं है. ओके. आउट ऑफ 10 पेशेंट्स 5 पेशेंट्स आर नॉट क्यूरेबल बिकॉज वो लोग लेट आते हैं. एंड दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज पेशेंट्स को समझाना पड़ता है कि शायद आप जिएंगे नहीं. दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज यू आर डीलिंग विद डेथ. डेथ के साथ डील करना इज अ वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट. सो जो न्यूज़ ब्रेक करना रहता है, फर्स्ट इज रिलेटिव्स एंड देन वी टेल द पेशेंट in a very different way, in the sense कि देखो, we will try to control your disease. I do not know how long I will be able to do it because chemotherapy, radiation से जितना result मिलेगा we will try. So this controlling of the disease जो रहता है time span बढ़ाता है. Does it improve the quality of life? Yes. सो आई वॉज थिंकिंग कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो थोड़ा एडवांस्ड है एंड वॉट एवर सर्जरी या जो कीमो रेडिएशन, तो क्या एक डिलेमा रहता है मन में कि हम इतना महंगा ट्रीटमेंट करें? एवरी टाइम देयर इज दिस मॉरल और एथिकल क्वेश्चन कि वेदर वी शुड ट्रीट अ पेशेंट हु इज से पुअर और हु कैनॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट. एंड देयर इज वन ह्यूज स्कूल ऑफ थॉट विच सेज दैट don't treat them because families will die after the treatment. Correct. But if you ask the patient whether they want to live one extra day or one extra week or a 1 month, they will do anything. So this is a play with emotion, reality, what can be done, trying to cut down cost, trying to make it affordable, working with the government setup or charitable hospitals where we are to bring down costs. If money is not a constraint and we know that radiation has its own side effects and chemo has its own side effects and surgery also has kind of its own troubles, would you advise patient to go ahead with this if financial was not an issue? Forget everybody else, when the first immunotherapy came, all right, very expensive. I asked a medical oncologist who is a colleague of mine, if I get melanoma or you get melanoma, I don't think we can afford this treatment. As doctors, I'm telling you, probably we couldn't afford that treatment. What will you do? And then we both kept silent and said that
If it is curable, why not? All right. You understand? If it's curable, why not? If it is controllable, and if I can contribute to the society and world, why not? So each individual has to understand what he wants. I cannot put a generic कि ये गरीब है या अमीर है इसको ट्रीटमेंट देना इसको नहीं. तो क्या आपकी इतने साल के प्रैक्टिस में आपने ऐसे भी फैमिली पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने एक्चुअली डिनाई कर दिया है? Yes, I मतलब फिनेंशियल कॉजेस की वजह से नहीं? No. I'll tell you honestly. One very interesting patient. He came and told me, "Doctor, tell me whether I'll going to live with this treatment." I said, "No." What is the advantage? I said, "You got 6 months benefit with this treatment." Okay, 6 months I'll spend this much. No, I don't want treatment. I will make a will. He went and made a will. Okay. He was in advanced stage, so probably nothing could have helped me. We could have bought him time. He made a will. He refused treatment, and he sent me such amazing greetings and gratitude that his wife and son were so insistent that they should treat him, but he just refused. I have seen patients who have. So there are patients, but do you feel that such patients, when they go into their last stage, the family or probably the patient himself might be regretting? There is despair. There is desperation. If you look at 80%, because when you see the patient, when the patient is taking the decision 6 months earlier, he's in a different bodily, there is a despair. physically. That is what I said. There is so much of despair and sometimes desperation that if you look at India or maybe most of the world, people, hope is one of the biggest business. Okay. And because of this hope, lot of these people, there are touts, there are so many people who are doing wrong type of treatment, selling hope, magic potions. It doesn't work in advanced patients. So if you had to tell us कि इतने सालों में आपको कौन से वो कैंसर्स हैं जिसमें आपको डेफिनेटली सर्जिकली मतलब आपको लगता है कि हाँ ये क्योरेबल है या काइंड ऑफ बेटर है, अगर चलो कैंसर तो हो ना किसी को, पर अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली हो ही तो वेयर यू फील कि ये कैंसर्स तो काफ़ी ठीक है? एक आपने सी एस सर्विक्स के बारे में बताया. 80% ऑफ कैंसर्स अगर स्टेज 1 में डिटेक्ट हुआ तो मोर देन 98-99% सर्वाइवल है. तो अगर हम वो इनिशियल एग्जाम्पल हेड एंड नेक कैंसर में स्टेज 1 में डिटेक्ट है तो क्योर होता है. ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल, लंग कैंसर curable, breast cancer curable, cervix cancer curable, colon cancer curable. Everything should be stage 1. Stomach curable. So most of the cancers are curable. लेकिन stage 1 तो early stage, early detection. जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि अगर डिनाइल वाला जो इशू था वो हटा दें तो शायद हम लोग थोड़े ज़्यादा पेशेंट्स को अर्ली डिटेक्ट कर पाएं. I'll tell you an interesting story. One journalist gave me a data in a live conference कि इंडिया में सर्वाइवल कम है और अमेरिका में सर्वाइवल ज़्यादा है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया में ट्रीटमेंट खराब मिलता है और अमेरिका में अच्छा मिलता है? तो मैं आंसर टू दैट वाज वेरी वेरी सिंपल. अमेरिका में स्टेज 1 और 2 वाले कैंसर्स 80% है, हमारे पास स्टेज 1 और 2 कैंसर वाले ओनली 20-25% है. तो पूरा वास्ट शिफ्ट हो जाता है जस्ट बाय स्टेजिंग. यूरोप में मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज फ्री. यस. स्टिल पीपल डोंट टेक ट्रीटमेंट. बट इट इज मच बेटर देन द वर्ल्ड बिकॉज ट्रीटमेंट फ्री रहता है. ओके. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया, यूरोप एंड अमेरिका. सो अभी ये तो एक फैक्ट है कि इंडिया में हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो स्टेज एडवांस स्टेजेस में आते हैं 3 या 4. तो आपको क्या लगता है कि इन ओवर लास्ट 20-25 ईयर्स ऑफ योर प्रैक्टिस आपने एडवांसमेंट्स देखे हैं इंडिया में? बहुत बहुत. मतलब अभी अगर कहीं दूर दराज किसी पेशेंट को कुछ अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो जाए तो सिंपल. आई स्टे इन न्यू बॉम्बे. ठीक है. न्यू बॉम्बे टेक्निकली ज़्यादा दूर नहीं है बॉम्बे से. सही है. But still, New Bombay did not have 20 years back a decent hospital.
सही. did not have a setup. Today, 3 cancer institutes. Four cancer institutes, including ACTRAC. Okay. And 2 more are coming. Isn't that development? Right. Accessibility to healthcare is one of the biggest cause of delay of treatment. तो वो तो है. So accessibility now, schemes like you have this Mahatma these- Phule scheme or government schemes. Government is trying so hard It to is covering it is lot of- difficult to cover the entire treatment, but there is a sincere attempt Right. So you, made to treat the poor. so you are definitely seeing changes on We ground. are seeing changes. तो अगर हमको ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन होगा तो ठीक रहेगा, तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन अपनी लाइफ में क्या ऐड करे या किस तरह के प्रिवेंटिव थिंग्स करे या कौन से टेस्ट रेगुलरली कराए जिससे वो अर्ली डिटेक्ट कर पाए ये कैंसर्स या. First thing is lifestyle change. ओके. Nothing can. be मतलब more वो तो important. करना वो ही करना पड़ेगा. तो लाइफस्टाइल चेंज में योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, ऑल दैट विल हेल्प यू. ओके. कैंसर होने के बाद इट डजंट हेल्प यू. ओके. मतलब आप understand. प्रिवेंट तो कर सकते हैं. एक बार अगर हो गया उसके बाद आप करो तो इट विल हेल्प यू, गिव्स पीस, बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. Help your body cure. It is going to definitely help you Divert your mind or probably calm of you course up. little bit like Yes. exercises वगैरह All those होगा. will help. But if you start today it is Alright. going to help you. All right. Lifestyle is going to help you. This is the only thing. Cut down on certain things. Cut down on sugar. Cut down on maida. Eat less. Be fit. Work more. Be happy. Like you. So these are some of the few reasons. अगर कोई लोग ये तो है, बट अगर कोई एनुअल हेल्थ चेकअप्स वगैरह जो लोग हाँ, रेगुलरली करते हैं उसमें आपको क्या लगता है कि ये कुछ चीज़ें जो मेल्स या ये कुछ चीज़ें जो फीमेल्स अपने एनुअल हेल्थ चेकअप में इंसिस्ट करें करने के लिए? Annual checkup is one way a very systematic approach करेक्ट. to instill discipline in people to go Right. to a doctor without having a problem. ओके. Please understand. All Correct. words are important. All right. I don't have any problem. When I don't have a problem, let me go and see if I have a potential problem. करेक्ट. You do cervix ka test, a pap smear. There's a chance you may detect cancer. ट्रू. 70% of kidney tumors are detected on ultrasound of the body in health checkups. ओके. Breast lump. Before you feel a breast lump, mammography से आपको छोटे छोटे रहते तभी समझते. It is curable that. So definitely annual health checkup Yes. and these lifestyle modifications, Hygiene hygiene. is going to take you a long way in having a good, high quality life. And even after doing all this, let's suppose you did all this, you still get cancer. You will be a better patient to get a better care And better cure, better probably. cure than a patient who is not Not taking care. Agreed. Completely agreed. I also wanted कि जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे हैं आप उनको कैसे सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वो पहला साइकिल, सेकेंड साइकिल, एंड बाय गॉड्स ग्रेस अभी कीमोथेरेपी वाले एजेंट्स आर मच बेटर टॉलरेटेड, बट So- स्टिल बाय द टाइम फर्स्ट सेकेंड कीमो में दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे विल से अरे हमें तो कुछ हुआ ही नहीं एंड ऑल दैट. बाय थर्ड फोर्थ देन द इफेक्ट so स्टार्ट्स what कमिंग. happens is, it's a myth actually one way. People think that like surgery or radiation, during treatment, surgery का जो भी होता है during treatment होता है. जी. कीमो आज लगा के गए, unless you have some reaction, मुझे तो आज कुछ नहीं होने वाला. जो भी होता है 3-4 दिन के बाद होता है. If hair loss is there, which is one of the biggest complaint of all patients, male or female, that will be happening in the second cycle onwards, or maybe the third cycle, True. right? Because that is the time it would take. Biggest problem and fear is hair loss, weakness. Sometimes motion. lose motion, like body immunity is low. Right. Infections which can happen. So do you have a counseling session when you start do. chemotherapy We do. prior? Right. So that you kind of mentally are Patients prepared. want to know everything, and once they know everything, they get scared also. But I think first, second, third के बाद they become okay. All right. You must be Rather seeing a than- lot of people surviving also Yes, after yes. now. It's such a thrill.
such a thrill. I It have must be been, such a cancer free for Yeah. 5 years. no, and 10 longer. years, 20 years, people come and visit me. So it's not such a gloomy thing. No, it is not. We have so many patients who are cured. The gloomy thing is when patients recur or when patients die during treatment, which is possible. Like you do a very high risk surgery for a patient trying to save his life, dies during treatment, that is a gloomy thing. Patient dies of chemotherapy, you feel bad. Because there is a potential that this patient could have lived a longer time. One question, Shishir. I wanted to know कि which are the cancers in your practice you feel ये hopeless सा ही है. ऐसा कुछ है जैसे है. हमारा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, जितना But- बेसिक मेरा अंडरस्टैंडिंग है. व्हेन यू से लिवर कैंसर आई फील I know. But things are changing now. ऑलराइट Things are changing. We got good immunotherapy drugs. ऑलराइट. Things are different. It is not like what it was. I will give you an example. Lung cancer, if it was stage 4, okay, या 15 years, 20 years back, this patient will die in 3 months or 4 months. Now, 40% of this patient may have some mutation. ओके. If they have that mutation and you give that mutation oriented targeted therapy, there is a good chance that this patient will survive for 5 years or 6 years or 7 years or 2-3 years, which is any time better than 2 months or 3 months or 4 months. Isn't that progress? Yes. So we and a lot of research must be also ongoing Yeah. now. Which are the research which are kind of you're really looking forward कि अरे वो research अगर सच में ठीक हो जाता तो things would have it would be a game changer. कोई आपके I ध्यान will में आ tell रहा you है? what. हाँ. One simple blood test to detect cancer, one simple tablet to cure cancer. That would be more That than would be enough. more than enough. I would be out of job. So today- but then I will try to do some other And things. this one word says Amen. I hope that it really turns true. It will change a lot of things. But all right. So Shishir, I wanted you to tell us about few of the cancers which you strongly feel about कि इसके बारे में जनरल पॉपुलेशन को पता होना ही चाहिए. So in females, Okay. in India, breast cancer and cervix cancer, right? Thankfully, cervix cancer incidence has gone down. Whether it is hygiene or better or HIV की वजह से condom usage. तो आप जो all these सर्विक्स things- कैंसर कहते हैं ये है गर्भाशय के मुंह गर्भाशय के. का tumor, yeah. So the इसमें- incidence has gone down. तो अर्लीस्ट सिम्टम्स हमारी जो लेडीज सुन रही हैं इसको उन्हें सबसे पहला सिम्टम क्या दिखेगा अगर उनको सर्वाइकल कैंसर अगर उनके पास एनुअल चेकअप का या ये फैंसी चीज़ें अवेलेबल ना हो तो किस सिम्टम्स पे वो तुरंत अपने डॉक्टर को अप्रोच करें. Bleeding. ओके. ब्लीडिंग 2 पीरियड्स के बीच में अनयूजुअल ब्लीडिंग होता है. तो तुरंत एक बार डॉक्टर को दिखा लें. और ये Simple. काफ़ी ट्रीटेबल है अगर Curable है. क्योरेबल है मतलब यू कैन हैव अ ग्रेट लाइफ. Right. जी. अगर आप नॉर्मल चेकअप के साथ में जाते हो तो दिस कैंसर्स आर डिटेक्टेड अर्ली. ओके. इफ ब्रेस्ट कैंसर, मैमोग्राफी कराओ, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो, एक हिंट डिटेक्टेड अर्ली एंड क्योरेबल. अगर आपको छोटे में बताना था कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो इसको आप कैसे नॉर्मली पेशेंट्स को बताते हैं कि वो कैसे इसको करें या मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया तो मैं share उसका कर- लिंक शेयर हम कर मैं देंगे आपको यहाँ link पे share कर बिल्कुल. देता तो हूँ. देन दे कैन सी कि उसको कैसे कर सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स वेरी हैंडी. Very हाँ simple. महीने में एक बार नहाते समय भी अगर आपने अपना ब्रेस्ट Very एग्जामिनेशन अच्छी simple, तरह very या कोई भी simple. अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो या ब्लड डिस्चार्ज हो निपल के थ्रू तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. Correct. तो ये एक हो गया. और इसके अलावा मेल्स में जी मेल्स में कोलॉन कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है. तो ये कैसे प्रेजेंट यस अर्लीस्ट सिम्टम्स आपको क्या लगता आपको है? मुंह में छाला है, ब्लीडिंग है, वॉइस चेंज है, आपको डॉक्टर के पास जाना है जो कि 1 हफ्ते 10 दिन से के ऊपर क्योर नहीं हो रहा. ओके. आप स्मोकर हो और आपको कॉफ जा नहीं रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या बाउल हैबिट्स में चेंजेस है या ब्लीडिंग हो रहा है या आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए देखने के लिए. इससे मुझे colon एक सवाल cancer. आया, क्वेश्चन आया मन में कि आपने सबसे पहले टोबैको के बारे में कहा था और स्पेशली गुटखा के बारे में कहा था आपने कि मुंह में तो गुटखा तो बहुत लोग खाते हैं. वो पहला
और जैसा आपने बता भी दिया कि सब लोग सोचते हैं कि सामने वाले को होगा, मुझे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर कोई गुटखा खाता है या फिर स्मोकिंग करता है या टोबैको का किसी भी तरह से कंजम्पशन करता है, तो वो पहला क्या साइन है जो उसको लगता है कि ये अलार्मिंग है, इसमें तुरंत हमको डॉक्टर को दिखाना मुंह में चाहिए? अगर अल्सर आए जो क्योर नहीं होता है, कितना समय रुकना चाहिए? अल्सर तो नॉर्मली लोग अल्सर काफ़ी होता है यूजुअली, कोई भी अल्सर 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के ऊपर मतलब cure हो सप्ताह जाता भर के ऊपर अगर आपका अल्सर है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर आपको मसूड़ों में दर्द है या उधर कुछ अल्सर है या इन्फेक्शन लग रहा है तो वो दिखा दो। इट इज़ सो इजी, क्योंकि आपको सिंपल है कि ENT के डॉक्टर या कैंसर के डॉक्टर मतलब आपके पास जो लोकली डॉक्टर अवेलेबल हैं, एटलीस्ट वो बायोप्सी करके तो तुरंत देख लेंगे। मुंह में एक वाइट पैच है, ओके, देखो जो नॉर्मल नहीं है, अगर आपको दिखता है तो आप उसको इग्नोर ना करें, डिनाई ना करें। जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा आप ये थोड़ा पहले पूछना चाहिए था, थोड़ा डिले हो गया। लेकिन जैसे आप ऑन्को सर्जन हैं, तो क्या ऐसा कोई ऑन्को सर्जरी है जो आप नॉर्मली नहीं करते या जिसके लिए अलग भी एक्सपर्टीज होता है? मतलब ऑन्को सर्जरी में भी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं या एक ऑन्को सर्जन जो है वो सारे तरह के तो कैंसर जनरली कैंसर सर्जन सभी तरह के ऑपरेशंस करते हैं, बिकॉज इंडिया में दे आर ट्रेंड टू डू एवरीथिंग, हेड एंड नेक, ब्रेस्ट, कोलन। बट अभी कुछ लोग हैं जो खाली एक सिस्टम्स करने स्पेशली लगे जो हैं। सिटी में रहते हैं, लेकिन मोस्टली इंडिया में जो ऑन्को सर्जन they do everything. एवरीथिंग। ऑलराइट। एंड मुझे ये भी जानना था कि आप तो पूरे एक टीम के साथ काम करते हैं, तो आपकी टीम में कौन लोग होते हैं जो एक पेशेंट का केयर लेते हैं? सो हमारा टीम तो काफ़ी बड़ा है, सो आई लीड द टीम। सो आई हैव 1 thoracic सर्जन, 1 हेपेटोबिलियरी सर्जन, एक हेड एंड नेक है, एक ब्रेस्ट है। तो ये तो डॉक्टर्स हो गए, सर्जन। Doctors हो मैं और भी टीम की फिर जानना चाहती थी कि आपके 2 साथ। कीमोथेरेपी नर्स है हमारे पास, जी, फिर 1 person who coordinates the whole activity, ओके। 1 counselor and 1 social worker. तो कोई सपोर्ट ग्रुप्स भी होते होंगे ना, और इनका सच में यूज़ होता है पेशेंट को? सपोर्ट ग्रुप्स बहुत काम आते हैं, इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। मैंने 15 साल पहले चालू किया था एक सपोर्ट ग्रुप, अभी भी चल रहा है। लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे एक ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, एंड अगर मैं और एक महिला को मिलती हूँ कि जिसको ट्रीटमेंट हो गया है, सो दैट मेरे एंजाइटी के बारे में शायद मैं डॉक्टर से नहीं बात करूँ, बट आई कैन टॉक टू अ पेशेंट, राइट। आई कैन टॉक टू कैसा हुआ ट्रीटमेंट, क्या हुआ, हाउ वाज इट, दैट एक्सपीरियंस, इट हेल्प्स। तो एक होप भी मिल जाता होगा, बिकॉज a cure somebody has patients. gone through that, ऐसा। And this is very kind of gloomy question, लेकिन a person who is approaching death, उनके क्या concerns होते हैं और आप उन्हें कैसे डील करते हैं? ये तो आप रोज देखते होंगे। Death is a reality for everybody. Okay. It's one of the biggest denial of human beings. Nobody wants to accept that. Whether it is because of cancer or old age or accident, anything, death comes to you. You don't go towards death. Disease like cancer, अगर advanced है और relapse हुआ है and you're dying, then you're hoping that some miracle happens. Okay. You're hoping that some cure will happen, some injections. इस चक्कर में people go helter skelter searching for some solution. Somebody in south of India, somebody in north of India, somebody in Brazil, some fruit, something. It's a fight of despair. Acceptance is very difficult. It's sometimes very difficult to take care of them. But we have specialists like palliative care, pain clinic, Okay. counselors to talk to them, grief counselors. But yes, when you're alive, I don't think anybody wants to accept it. Very, very difficult. So no amount of word actually can probably It's very difficult because that feeling, आपको ऐसा लगता है क्या कि unless a person goes through it, it's impossible to it's impossible to understand. मुझे ये जानना था कि कैसा है, कभी कभी कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और पेशेंट्स के रिलेटिव बहुत सपोर्टिव होते हैं, ऐसा है, दे वांट टू डू, बट एक मोमेंट ऐसा आ जाता होगा ना जब लगता होगा कि बस अब खत्म करो सब। आपको ऐसा कभी लगता है? बहुत बार एम्पैथी, सिंपैथी
It's all part of. And But I see sometimes death relieves the patient, and many of the times the relatives also, yes. because the end stage sometimes can be very, very painful. So if at all some family is going through and ऐसा कभी मन में ख्याल आ जाए तो इसमें अपने आप को इतना ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं है. It's just a human nature that you, It is. not that you don't love that person, but probably the family has suffered so much that It's not that. Emotions are very, very, very difficult to understand. I have faced a problem when I have told them that please don't do anything. I have faced them a problem when I said please do everything. So I think now I go by patients and relatives' wish as to what they want to do. If they want that we should take care of them, some patients बोलते हैं ventilator पे रखो. We do, although we try to counsel them all the time. So we do try. I'm going to ask you something very controversial now. Yes, What is your take on euthanasia? on euthanasia. Euthanasia is mercy killing, जो I know, जनरल पब्लिक I जानना know, चाहती हो, I know. जहाँ पे So it willingly- is illegal in India. हाँ, there has been Okay. some advancement, but No, so it is illegal illegal as such. in India. नहीं, ये Like तो cannabis is illegal in India. बस मैं ये जानना चाहती थी कि आपका पर्सनल टेक क्या है, क्योंकि आप तो रोज ऐसे लोगों से देख मिलते होगे ना. I feel that if I have the right to live and breathe in this country the way I want without harming others, then I should be allowed to die if I want to. So you are favoring kind of I have softened. for these Yeah, patients, not yeah. for the that, not for all. Not for otherwise all, it's not all. for But all. yes, if somebody has really got something and doesn't want to go through that, they should be offered a chance. That if they want, then why क्योंकि not? ऐसे कहते हैं कि when you are fit and fine, you might say कि हाँ मुझे तो, I know. but Because it's not easy. It's not easy. all. So I think that choice I think of living is with the patient. The choice of death should also be with the patient. एंड थोड़ा सा हमें प्रोस्टेटिक कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में भी बता देते जाते जाते कि इनका कैसा Testicular प्रोग्नोसिस होता cancer है. तो आजकल curable है. तो वो उसमें डरना And नहीं. prostate cancer is also curable if you detect early. एंड ब्लैडर कैंसर. It is. So the only thing is prostate cancer is that early detection again is key. Okay. Simple blood test, PSA, robotic surgeries, cure rates. Lot of people have it now. And the worst is 20 years back, incidence of prostate cancer was less ओके. in our country. Today it is more. That means there is a problem. There are few cancers which has increased dramatically. ओके. Colon cancer, prostate cancers, lung cancers, and this is Americanization of the As we Indian. had started with ki, Yeah. all right, so Yeah. you are promoting homemade food Yes, for I'm promoting everyone. Very nice. Thank you so much, Thank Shishir, you. for such an elaborate talk. And we have, I think, gone above 1 hour. But then I promised to again catch hold of you. And this was such a lovely, lovely, lovely talk. Thank Some you. things Thank which you so touched much. heart. Thank you. Thank you so much.